Student, good morning to all of you. Today we are going to express rule for exercise 5.3 derivative of implicit function. Student, in exercise 5.1 and 5.2 already we have discussed the expression y is in the term of x and x is in the term of y. Sometimes we cannot change the function in the term of x or in the term of y. Such type of function is called implicit function. Like that x plus sin xy minus y is equal to 0. Here student, xy is the angle of sine, so we cannot change y in the term of x or x in the term of y. Such type of function is called implicit function. Student, implicit function means unclear, अस्पष्ट फंक्शन. डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन में हम क्या करते हैं? देयर इज नो एज्यूमिंग, डायरेक्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो सॉल्यूशन, डिफरेंशिएटिंग with respect to x, we get what we get? d by dx of x plus d by dx of xy minus d by dx of y is equal to 0. Student, differentiation of 0 is also 0. So differentiation of x is equal to 1 and differentiation of sin xy, already you know that according to chain rule, differentiation of sin x is what, student? Differentiation of sin x is cos x, so differentiation of dy dx of sin xy is cos xy. And already you know that in the place of xy, in the place of x, xy is written, so again differentiating with respect to x. So again dy dx of xy and dy dx of y is equal to dy by dx is equal to. So 1 plus cos xy and two variable here, apply product rule. Already we have discussed about product rule of two variables. First function dy dx of second function plus second function dy dx of first function. First function dy dx of second function plus second function dy dx of first function minus dy by dx is equal to 1 plus cos xy and x dy by dx plus y into 1 minus dy by dx is equal to 0. Then after multiplied them, 1 plus cos xy into
x dy by dx plus y cos xy and minus dy dx is transferred to the other side, dy dx. Same term is transferred to the other side. What we get? X cos xy dy by dx minus dy by dx is equal to minus 1 minus y cos xy. dy by dx is common. What is remaining? X cos xy minus 1 is equal to minus 1 minus y cos xy. dy dx is equal to minus is common 1 plus y cos xy upon x cos y minus 1. Student, this is the differentiation of implicit function. Today we are going to start exercise 5.3. Exercise 5.3. Question number 1. 2x plus 3y. 2x plus 3y is equal to sin x. तो इस टाइप के इक्वेशंस को स्टूडेंट हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं. तो डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get 2 d by dx of x plus 3 d by dx of y is equal to d by dx of sin x. So 2 into 1 plus 3 dy by dx is equal to cos x. 3 dy by dx is equal to cos x minus 2x. dy by dx is equal to cos x minus 2x by 3. This is your answer. Question number 2, same as it is. You can solve it. Question number 4 is that Question number 4, xy plus y square, xy plus y square is equal to 10x plus y. Differentiating with respect to x, we get first function d by dx of second function. Here two variables here, student. So if you want to differentiate them, then applying product formula. First function dy dx of second function plus second function dy dx of first function, and this is dy dx of y square means 2y dy dx of, in the place of x is equal to y, student. हम क्या करेंगे, y स्क्वायर को जैसे हम x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते थे वैसे ही हम y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, बट इन द प्लेस ऑफ x y इज प्रेजेंट हियर, सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अकॉर्डिंग टू चेन रूल, एंड 10x डिफरेंशिएशन ऑफ 10x इज इक्वल टू व्हाट, sec स्क्वायर x, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू dy dx ऑफ y. x dy by dx plus y into 1 plus 2y dy by dx plus is equal to sec square x plus dy by
dx student. So same term transfer to one side, x dy by dx plus 2y dy by dx and minus dy by dx is equal to sec square x minus y. dy by dx is common. What is remaining? X plus 2y minus 1 is equal to sec square x minus y. So student, dy by dx is equal to sec square x minus y upon x plus 2y minus 1. This is your answer, student. Next question. Question number 9. Y is equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square. Student, from this question it is clear that आप डायरेक्ट भी इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और चाहें तो ये ज्यूमिंग भी कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो अगर x को हम टेन थीटा मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो यहाँ पे लेट कर लें, लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा, देन वी गेट y is equal to sin inverse 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. Student, already you have been studying in trigonometric function. Sin 2 theta is equal to, there are two formula of sin 2 theta. क्या होता है? sin 2 theta is equal to 2 sin theta into cos theta and 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. तो ये हो जाएगा स्टूडेंट y is equal to sin inverse sin 2 theta. Since sin 2 theta is equal to tan के फॉर्म में 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट, y is equal to 2 theta. और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? इसको हम स्टूडेंट ट्रांसफर करेंगे, जब tan उधर ट्रांसफर होगा तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। पुट कर देंगे स्टूडेंट वैल्यू 2 tan इनवर्स x, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, y इज इक्वल टू 2 tan inverse x, differentiating with respect to x, we get dy by dx is equal to 2 into 1 upon 1 plus x square, dy by dx is equal to 2 upon 1 plus x square. This is your answer. Next question student, question number 14. Remaining question, do yourself in HW. यहाँ पे देखें स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 is what? Y is equal to sin inverse 2x upon 2x into 1 minus x square. अब यहाँ पे स्टूडेंट हम देखें, और x की जो वैल्यू है
वो क्या है, -45 से लेकर के -1/√2 से लेकर के +1/। अब यहाँ पे स्टूडेंट x को यदि हम साइन थीटा मानते हैं तो देखिए क्या होगा, लेट x = साइन थीटा, देन साइन इनवर्स x = थीटा। अब यहाँ से स्टूडेंट एज्यूमिंग करेंगे तो y = साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू √1 - साइन स्क्वायर थीटा। हमने x के प्लेस पर साइन थीटा रखा, x = साइन थीटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो y = साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। अब स्टूडेंट ऑलरेडी यू नो दैट 1 - साइन स्क्वायर थीटा = cos स्क्वायर थीटा and square root of cos square theta is cos theta, so you can write cos theta. And already you know that 2 sin theta into cos theta = sin 2 theta student, so y = sin inverse sin 2 theta, this is cancel, y = 2 theta। अब आप वैल्यू रख दो यहाँ से, तो y = 2 और थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x और डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy/dx = 2 × 1/√1 - x²। It means what? dy/dx = 2/√1 - x²। Student, remaining question do yourself. After that we will discuss next exercise. Thank you student.